Viewers Public Service Commission recently has declared the result of J&K Combined Competitive Examination, and we have with us the topper Anjum Bashir Khan, who has nailed this exam in a very first attempt, and that too without any coaching, and every effort that he has put from his own side without entering into any coaching institute. Anjum, welcome to Excelsior News. And first, accept our congratulations for this phenomenal success in this exam. And tell us that how was your journey from a teacher to topper? Thank you so much for the wishes. I think it started way back in 1990s. When I was in my childhood, I dreamt of becoming a KS officer actually, and from 9th 10th onwards, then my education actually, primary education I completed in Surankot itself. Then when I came back in Jammu, I did my 10th from Shangri-La Public School, and after 12th from Sri Ranbir Multilateral Higher Secondary School, and after that I did engineering. Though my interest and my all about my career was focused on KS, but somewhere I thought I had to do graduation, so I did engineering because it was my interest. After that, after BTech, then I started preparing. I'm a 2012 pass out from Baba Ghulam Shah Badshah University, and after that I started preparing seriously for that. Uh, there has been a difficult time in the beginning, but Alhamdulillah, all praise to the Almighty and my parents that finally I'm here. What next now after topping KS? Is there any plan to crack UPSC or the IAS? No, you're planning for to going into that direction also in the coming time. As of today, I haven't thought about it. Maybe later on, I just develop some thoughts. But definitely, one thing is clear that I have love for my own state, and I want to stay in it. As of today, I do not have any such plans. Anjum, Jammu and Kashmir youth has, a potential, a talent, and a mettle which they have proved at the national and international level, and you are the best example of that. But still, there is a youth in our state which is angry with the system, and they feel that they are a victim of this system. And now you are going to be the perfect example to be part of that system. So, how you will put this thought of equating these both equations? Yes, I think I have a message for the youth and for the system also. One thing is that solution can never be this solution lies in peace. Violence cannot be a solution of anything. We must not resort to violence. People, if even youth and youth, even of far-flung areas, they have a lot of potential. Even people are more, people have more caliber than me. They are more, they're very intelligent, hard-working people with potential. But the thing is that to use that potential, to harness that potential in a positive way. My message to youth is, don't waste your talent in negativities. Any negativity destroys you. Be a positive citizen. If you do something good for the family, for the society, for the country, it's really which is required at this moment, and for the system also, because we need to look into the thing that there is certain sort of something is happening, that's why, which is making the youth disillusioned. Something wrong is also there, and we need to correct it, so that we need to provide ample employment and educational facilities. Education is there, it has penetrated, but we do not have ample employment opportunities. That's why even the educated youth are going to the ways which we do not want them to go. So I think the system must work in the direction. We should look into the root causes, why they are opting to such ways. And my message is also to the parents also. Parents play a very important role in inculcating the values, ethics in their children. During the whole process of preparation, there is a time when one is get engulfed with whole negativity, and he used to drown in that negativity to the extent then time comes then when we think that now leave this whole process, let us, I'm already in the teaching side and let me continue with my teaching. Don't you get that kind of thoughts in your mind?
if there was this kind of a time, how you used to overcome all these negativity and get yourself engulfed with the positive reservoirs, and what was that positive reservoir and from where it used to come? Actually, you very well, articulated this thing that negativity comes definitely. There is a sort of frustration in the youth that I'm an educated one. I'm not getting this job which I'm preparing for, actually. But that is the reason after doing my engineering, when I got two, three different offers within from the, I got selected for different exams. I just my focus was KAS, but in between I thought job security is also very necessary. So I joined teaching because as a teacher in school education department, you get a lot of time. There are vacations. Even in the school, when you teach, you learn. It provides you ample time for the preparation. There were times when there were frustrations and all that, but I am very spiritual person, and I think if you put your efforts, if you give your best, do your hard work, almighty never lets you get astray. He pays you back in a way you never dream, actually. Viewers, from Ministry of External Affairs to Defense, it is the women in India there which are governing these posts, and this is the perfect example of rising graph of women empowerment in India. And today our guest today is also a woman who have cracked the state PSC exam with rank 4, and she is Kashyap Neha Pandit. So welcome to Excelsior News, Neha, and accept our congratulations for this feat that you have achieved. And tell us that when you started infusing the character of being a civil servant for the state. So for the first time I thought about it in 2013, and I gave my first attempt in which I could not qualify. This is my second attempt and I did it. Okay. So, first attempt you failed. So what went wrong in the first attempt, and how you overcome all those limitations and cracked this in the second attempt? So in the first attempt I qualified my pre, लेकिन second attempt में I lost it by 32 marks. After then जितनी भी कमियां रही, मैंने उन सबको ओवरकम करने की कोशिश की. मैंने दोबारा अपने पेपर्स को अपने माइंड में रिवाइव करा और सोचा कि क्या कमियां रही हैं. फिर उसके बाद ग्राफ्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू अपने पेपर को प्रिपेयर करा, एंड इस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वो सारी कमियों को ओवरकम करने की पूरी कोशिश की, एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. To whom you will give the credit of this success? मैं सबसे पहले तो लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानती हूँ और उनको रियली थैंकफुल कहना चाहूँगी. मतलब मैं जितनी बार थैंक्स कहूँ उतनी बार कम है. और प्लस अपनी मदर को, अपने चाचू को और अपने भैया को. So would you like to share the strategy of success with the aspirants who are watching right now? जी सर, मैं उनसे कहना चाहूँगी, पहले तो फर्स्टली मेरा फोकस ये है कि बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढते हैं. जैसे कि इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद आप या तो MBBS कर ले या तो कोई ऐसा कोर्स कर लिया जो आपको बहुत जल्दी पे कर सकें. लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विस, आई एम नॉट सेइंग कि उनको सिविल सर्विसेज ही करना चाहिए. मुझे ये लगता है वो जो भी करें लेकिन मन से करें. ऐसा करें कि आपको अपने आप पे प्राउड हो, आपकी कम्युनिटी को, आपके स्टेट को, आपकी कंट्री को आपके ऊपर प्राउड हो. और सिविल सर्विसेज में आने का ये है कि आप अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी से वेल वर्स्ड हो सकते हो, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट और आपका एक ऐसा इंट्रैक्शन बन जाता है ना कि आपको एक वक्त अपनी गवर्नमेंट से फिर फेथ नहीं उठता. जैसे आजकल के क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनको फेथ नहीं रहता गवर्नमेंट पे. तो सिविल सर्विसेज में आना इस मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. What was your प्लानिंग स्केड्यूल, जो आपका क्या था, मतलब पढ़ने का किस तरह का आपकी दिनचर्या की अगर हम बात करें, वो किस तरह से आप मतलब मैनेज करते थे, उसका क्या स्केड्यूल था आपका? सर मेरा ये था कि मुझे कुछ भी करके ना अपने 24 आवर्स में 12 to 14 आवर्स अपनी स्टडी को देना है, चाहे जैसे मर्जी. फिर मैं क्या करती थी, रात को 10 बजे सो जाती थी और 4 बजे उठती थी. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को त्यागा था. तो मुझे लगता है कि उनको त्यागना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये करना है, आई एम नॉट सेइंग कि एंजॉय नहीं करना चाहिए लाइफ को, स्पोर्ट्स करो, कुछ भी करो, पार्क में टहल लो, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एटलीस्ट इस पीरियड के लिए त्यागना चाहिए. The preparation time period, it's very tough, and sometimes there are events when we used to get drowned in negativity.
It's a time period that comes in everyone's life. So how you used to evolve or come out from that period? What was that mechanism, or where was that reservoir of positiveness inside you? Tell us, to our viewers or the aspirants who might be thinking of being the civil servants tomorrow, how we have to overcome all these negative thoughts that used to come in your mind. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि आप मुझसे कब पूछें. मैं कहना चाहूँगी सभी से कि मैंने कैसे अपनी नेगेटिविटीज़ को ओवरकम करा. कई बारी तो मैं हाथ खड़े कर देती थी और अपने पेरेंट्स को लिटरली कहती थी मैं नहीं कर सकती हूँ. एक बारी क्या हुआ, मेरी मदर ने मैंने अपनी मम्मा से कहा मम्मा इस रूम में ना मुझे सिकनेस होता है, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ. तो मेरी मम्मा ने क्या करा, लॉर्ड कृष्णा की कान्हा की छोटी सी फ़ोटो मुझे दे दी और मेरी मम्मा ने कहा इनसे बात करना सीखो. जिस दिन आप इनसे बात करना सीख जाओगे ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द वर्ल्ड विल बी विद यू. और आई सीरियसली डू बिलीव कि आपको भगवान से बात करनी चाहिए. चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो आपसे बात करते हैं. और मैं उन्हीं से बात करती थी. जब भी मैं गिर जाती थी और संभल नहीं पाती थी, मैं बस उनसे बात करती थी और मैं संभाल लेती थी खुद को. Neha, being women and being a part of the system bureaucracy now, what would you like to do from the core of your heart to this section of the society? एग्जैक्टली सर. मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी है. मेरे चाइल्डहुड से ही हमें घर से जाना पड़ा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा. उसके बाद मैं टेंट में ओपन एरियाज़ में रही. उसके बाद में श्री वाला 1 रूम टेनामेंट था हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं करी. 2011 में यहाँ आई. बहुत सारे सफ़र देखे. मैं अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए ये करना चाहती हूँ और उन सब बच्चों के लिए जो डिज़र्विंग है, उन सब के लिए ये करना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने सही ना, बेसिक एमिनिटीज़ लैकिंग थी, वो उनको ना सहनी पड़े. तो आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग जो वो डिज़र्व करता है. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि KAS क्वालिफाई करने के बाद. बहुत ज़्यादा मैं खुशी हुई. आई कांट एक्सप्रेस माई इनर फीलिंग्स दिस टाइम. बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं एक उस फैमिली से बिलोंग करता था जो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी बसर कर रही थी. मेरे वालिद साहब मजदूरी करते थे और मेरी अम्मी जो थी वो घर का काम करती थी. उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मेरी अम्मी कभी कभी अपने कुछ चीज़ें, कोई जेवरात बेचती थी मेरी पढ़ाई के लिए ताकि मैं बुक्स खरीद सकूँ. तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की टू अचीव दिस फीट. एक्चुअली अगर हम देखेंगे अपने इलाके को, यहाँ अपने गाँव को, तो यहाँ से बहुत सारे जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है. तो मैं इसी लिहाज से, इसी उम्मीद के साथ इस सिविल सर्विसेज में आया कि ताकि मैं अपने गाँव के लिए काम करूं, अपने लोगों के लिए काम करूं और इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करूं, इस अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करूं. बिल्कुल कि वो अपने जिस शोबे में जाना चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क करे. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम. सक्सेस विल टच देयर फीट इफ दे वर्क विद डिटर्मिनेशन, विद ऑनेस्टी एंड विद पेशेंस इन एनी फील्ड इन विच दे वांट टू गो. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम. सपोर्ट मैं ऐसा कहूँगा कि अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स का सपोर्ट नहीं होता तो मेरे लिए ये नामुमकिन था. उनके सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था. बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली, टू माई सिस्टर्स and to all the people of my area, of my village, who are very excited after hearing in this news that I have qualified. This is also a message to the youth who is aspiring to be the civil servants tomorrow, that the only way to achieve the success is hard work. But I will say hard work and smart work. That will pay in this time. With cameraman Karan Singh, this is Amit reporting for Excelsior News.